skills is a must-have attitude towards achieving excellence in life. And he has also done this various certification programs. Amongst these, he recalls leadership development program from XLRI Jamshedpur as a true differentiator. He is also a certified counselor and practitioner. So Kuldeep sir, we would like to welcome you on behalf of Full Marks and Nbsc. So please, we are, without wasting much of the time of the students, we eagerly want to hear something beneficial from you. Thank you, sir. Thank you so much, Ashutosh, and a very warm welcome and a Sunday good morning to all the viewers. I understand this is a very crucial time which we all are going through, especially the students, who are just waiting for the board examinations to happen. Very obvious, हम सब बड़ी उत्सुकता के साथ एग्जाम की इंतजार भी करते हैं और उसके साथ साथ क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे बड़े सारे सवाल मन में आते हैं. So today we'll not only look at how the toppers score, but probably we'll look at some tips how to score 100%. So when we say 100%, we don't mean कि खाली maths में we are talking about 100%. In science way, gone to 60 or 70 or 80. So the average out or the aggregate will drop down. When you look at scoring 100% in the board examination, we should actually look at the spread of the subjects. सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पे हमने 100% कैसे स्कोर करना है. सो सम ऑफ द टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये कुछ लाइफ टाइम अचीवर्स के टिप्स हैं. दिस इज नॉट माय ओन मेड, दिस इज नॉट अबाउट माय थॉट प्रोसेस. जिन लोगों ने टॉप किया है पिछले कुछ सालों में, तो उनसे जब बात हुई, जब वार्तालाप हुई, when we keep talking to such students who score beautifully 100% in all the subject, almost they are there, they are the toppers, तो उनसे कुछ टिप्स लिए, तो वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे. So before moving ahead, I'll share the screen with you all, and any one of us can let me know if the screen is visible so that we can move ahead. Ashutosh or anyone, yes, sir. You can yes, just sir. confirm. Yes, sir. So it's visible. Sir. Visible. Great. तो हम आज जिसके लिए बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है, हाउ टू स्कोर 100%. तो स्कोर 100% करने के लिए नॉलेज की तो बात होती ही है कि बच्चा पढ़ाकू है, पढ़ा लिखा है, पर कई बार हम भूल भी जाते हैं एग्जाम के टाइम, स्वाभाविक है. तो हाउ टू ओवरकम दीज थिंग्स, विल जस्ट लुक एट इट वेरी क्विकली. जैसा कि मेरा मानना है, और आप सभी इस बात से सहमत होंगे, हम सबके दोस्त हैं, राइट? आई कैन नॉट हियर यू बट यू कैन हियर मी नाउ. कि हम सबके दोस्त हैं, हम सबके बहुत सारे दोस्त होते हैं. वी नो आवर फ्रेंड्स इन एंड आउट. हम अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी खूबियां, उनकी कमियां. उसी तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स को कैसे अपना दोस्त बना सकें. तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे, आउट ऑफ दैट इट इज व्हाट टॉपर्स डू. टॉपर्स आर आल्सो लाइक दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक you and all of us. They also study this in the same school. They also eat the same Indian food. They also enjoy the same culture or the aura. But what exactly they do, which is slightly different or more different than what we do? Then tips on how to divide the question paper and score high marks. Very important, the night before the exam. Very scary. Something happens in the stomach. Yes.
It happens, स्वाभाविक. And then unconsciously or subconsciously कुछ गलतियां कर जाते हैं. Even though पता होता है, still we make mistakes. So how to overcome all this? We'll look at those things. Toppers करते क्या है? जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम्स को अपना दोस्त बना लेते हैं. जैसे आपके दोस्त हैं, वैसे एग्जाम्स को अपना दोस्त बना लो. You'll ask me how to make them our friends. Very simple, absolutely simple and crystal clear about it. आपको पता है आपके दोस्तों को क्या अच्छा लगता है, आपको पता उनको क्या अच्छा नहीं लगता. Similarly, एग्जाम पेपर को you should know कि पिछले कुछ सालों के एग्जाम पेपर में उनका पैटर्न क्या है. What is the type of questions that's being asked? What is the weightage of the marks that you're going to get? And what is the marks distribution in the question paper? तो क्वेश्चन पेपर्स को पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन पेपर, स्पेशली 10 years, last 10 years, इतनी अच्छी तरीके से you should go through in and out and make them as your best friends. You should become very familiar with these question papers. एकदम familiar हो जाओ. और familiar कैसे हो पाओगे? When you start practicing. Make sure that you practice from the last 10 years or the previous years question paper, especially the last 10 years. Here, today, I can recommend the Nbsc, who is doing a lot for the students, helping them put these questions on the table to you. We'll learn more about it in the time to come. Fine, you'll say we can make the exam paper our friends, but how to start? कल से शुरू करेंगे, है ना? और वो कल कभी आती नहीं. करते करते क्या होता, हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकले, फिर टेंशन बननी शुरू हो जाती है. हाउ टू गो अबाउट? जल्दी करते हैं, अभी शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं. ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट्स कमिंग इन द माइंड. 2 घंटे रुक के ब्रेकफास्ट करके गेस्ट आ गए, चल दोपहर बाद स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो चीज कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाती. तो लेट मी गिव यू अ टिप अबाउट इट. बट बिफोर आई गिव अ टिप, इट्स रिटन हाउ टू स्टार्ट just 10 minutes. तो क्या 10 मिनट में कोई एग्जाम प्रिपेयर कर सकता है? Obviously, you know that. But what do you think? Can anybody start or anybody practice in 10 minutes? No, not at all. But brain, दिमाग को कंडीशन करो. दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बना दो. Fool the mind by saying 10 मिनट पढ़ूंगा. 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट. And start. Make a start. If you have to win in anything, be it sports, be it studies, be it any extracurricular activity, the first step is to start. Most of the student, they fail to start. They start at a very last stage, जब time जा चुका होता है. And then they think, थोड़ा सा 1 महीना पहले स्टार्ट कर लिया होता ना, तो things would have been better than this, right? Hope you agree with me on this. So when you say 10 minutes, give that 10 minutes conditioning to your mind. दिमाग को सिर्फ ये करो 10 मिनट पढ़ेंगे. Believe you me, 10 मिनट में टॉपिक खत्म नहीं होता है. But when you start, you make a start, फिर आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी आप पढ़ते हैं कंटिन्यूअस होता है. थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप पढ़ना शुरू कर देते हैं. But with this thought process कि just 10 minutes, सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, माइंड को कंडीशन करो और एक स्टार्ट कर लो. But before you do that, or once you get into that groove, once you start conditioning your mind and come into the final practice, my suggestion and most of the toppers' suggestion, spend one complete day
in making a timetable. You'll say timetable मैं 5 मिनट में बना सकता हूं, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. How authenticate or how much it can be effective, only you can let me know, or you can help yourself with. But I would suggest make an exhaustive timetable. Spend time, because this timetable is actually going to make your routine. आपकी practice कराएगा, आपको help करेगा. So you need to spend time for this timetable. How to prepare it? Another tip: 7 days a week. And suppose, let's look at how many subjects do you have normally? 5, 6 maximum. Give a day to each subject, right? You're left with the 7th day. It could be a Sunday like today. 7th day, keep it for the subject that is the toughest or you don't like the most. Example, say maths. You need to practice a lot. Keep that spare day for that. Subject wise, this is one of the tips. Subject wise, dedicate a day to it. Dedicate a day to it. Number of days, number of subjects. Now, break down, de-layer करिए इसको. 6 दिन 6 सब्जेक्ट, 1 दिन 1 सब्जेक्ट. अब उस एक दिन के लिए, सपोज मंडे यू हैव इंग्लिश और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, उसके सारे चैप्टर्स लिस्ट डाउन करिए. List down all the chapters from the syllabus that you have got. Then look at how many days to go for the exam, how many chapters to cover. So divide the number of days with the chapters that you're supposed to complete. Obviously, you'll need the last days for the practice, so don't include those days while preparing an exhaustive timetable. You will come to know how many days you can finish one chapter. Accordingly, give that time to those chapters. There will be chapters which are very, 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 very important. Keep cushion for those chapters. Keep those days extra for such chapters. Breaking down into how many chapters per day. Then set a target, and let me tell you, when you set a target, it will help you achieve. This is how you prepare a timetable for yourself. And once you've prepared the timetable, don't forget the 40+5 formula. Normally, some students, some people say, 1 घंटा 2 घंटा इतना stretch पढ़ो. Most of the panelists would be there and teachers भी होंगे, बहुत सारे students भी होंगे, which would agree. And it's been proven time and again. 40 minutes at a stretch अगर आप पढ़ते हो with full focus, everything goes in your brain. More than that, it starts becoming a tangent. तो बहुत सारी चीजें फिर ऊपर से निकलनी शुरू हो जाती है. Mind saturate हो जाता है. Don't burden yourself. Don't tax yourself. अभी अपने पास time है. So what you can do is you can follow the 40+5 formula, which says 40 minutes तक at a stretch पढ़िए without any disturbance and give a 5 minutes break. So when you say this 5 minutes break, उस 5 मिनट में जाके टीवी देखने मत बैठ जाना. ये होता है, टीवी पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, घर वाले कुछ देख रहे हैं, you go and sit और पता लगा 1 घंटा निकल गया. Don't do that. That's not good. Suggested, don't even look at the WhatsApp or your mobile. कुछ इंटरेस्टिंग होगा फॉरवर्ड करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, कुछ यूट्यूब पे देखने लग जाएंगे, कुछ किसी की मेल्स आ गई वो चेक करने लग जाएंगे, and you'll end up losing your time. You'll end up losing your time. You move out from the timetable and then you see it will go in a haphazard manner. Keep it disciplined. So 5 minutes break, walk around the room, the house, or if you have a garden, take a stroll for 5 minutes.
drink a glass of water, listen to one of your favorite song. 5 मिनट का वो गाना सुन के जो एनर्जी आएगी एंड तू आएगा, come back, restrict yourself for 5 minutes, come back, sit down and start again, fresh, सब कुछ याद है. This is one of the most workable solutions or the formula that toppers have applied in the past. Then, while preparing the timetable, one very important thing which is there in the subconscious mind, but normally we tend to forget or we tend to give a cushion or keep it at for the last stage is, जो टॉपिक हमें अच्छे नहीं लगते ना, जो थोड़ा सा टफ होता है चैप्टर, जो पढ़ने का मन नहीं होता, जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को, उसको हम लास्ट के लिए रख देते हैं. सजेस्टेड ऐसी चीज को पहले करिए, बिकॉज वंस यू डू इट, वंस यू अचीव दैट विक्ट्री, मेंटली आपकी टेंशन दूर हो जाती है. You'll be very happy, you'll be excited, you'll be very confident. Oh, I've done that. Otherwise, even the best of the topics that you choose, जो आपको आता है, जो अच्छा लगता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स यही करते हैं, उसको पहले पढ़ते रहते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, टाइम कम बचता है, जो टफ था उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, तो फिर होता क्या है, उसमें मार्क्स नहीं आते. तो मार्क्स नहीं आएंगे तो या तो हम बात कर रहे हैं 100% स्कोर करने की. तो इफ यू वांट टू डू दैट, अचीव विक्ट्री ओवर व्हाट यू डिड नॉट थिंक अबाउट. सो कंप्लीट व्हिच इज इनकम्प्लीट. जो इनकम्प्लीट करके आपने दूर रखा था उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए. जो आपको अच्छा लगता है वो तो आप करोगे ही करोगे, वो तो आपका फेवरेट है, यू विल गिव मोर टाइम और इन लेस टाइम यू विल कंप्लीट मोर. सो इट मेक्स मोर सेंस टू कंप्लीट व्हिच इज incomplete. I hope you'll agree with me on this front. Very important question कि which question is important. हर बच्चा टीचर के पास पहुंच जाता, मैम प्लीज बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता दो, इंपॉर्टेंट चीजें टिक करा दो. Friends, let me tell you the most important question most of the time the students ask, जिनसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे भी हर जगह पे उनका एक ही सवाल होता है, इंपॉर्टेंट चीजें बता दो. तो इफ यू वांट टू नो द इंपॉर्टेंट थिंग्स, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अपना दोस्त बना लो, मेक देम योर फ्रेंड्स, गो थ्रू द लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर एंड वन टिप, एनबीएससी फुल मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर लो. दे कम इन 3 पैटर्न. आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. सो इफ यू एक्चुअली excuse me, if you actually want to score well, if you actually want to see where you stand, go for it. So the most important questions, 80% of the questions are repeated, they are repetitive in nature. The only thing is question framing change हो गई, word आगे पीछे हो गया, crux वही रहता है. 80% of the questions are repeated time and again, and you can check it over the period of last 10 years. So 10 में से 8 सवाल तो आपके वही आते. Here you might say the pattern has changed. तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हम कहां से लाएं? Well, the subject matter remains the same. The type of questions might have a different frame, but here NBSC comes into the fore because we have some panelists from the CBSE who's prepared the question papers for you, and you can actually score good by looking into the NBSC question papers. They'll give you the best of the patterns. So we'll talk more about it in the time to come. Don't believe the rumors. फोन चेक किया तो फ्रेंड का आया, ये वाले कर लो, पिछली बार ये टॉपिक आया था इसको मत करना, इस बार नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पेपर आ गया, ये सैंपल पेपर आ गया, इसी को कर लो. Don't believe in such rumors, especially with the pandemic. अरे एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएंगे, अभी नहीं पढ़ते. इस कान से सुनो, इस कान से ऐसी चीजों को निकाल दो.
Don't listen to such things. All that you need to do is keep or stick to your timetable. Don't believe in any such rumors. Don't listen to any such rumors the very first time. Say no to it, because you'll waste time, and time is very precious. So don't waste time. Rather, prepare for yourself instead of wasting your time. When you say study for 8 hours a day, आपने अपना टाइम टेबल बनाया, अब आप बोलोगे कि जी मुझे अपने दिन को कैसे शेड्यूल करना है. So there's very one interesting thing. जैसे हमने इनिशियली बात की, you can give one day to a subject, but हर एक के साथ ये फॉर्मूला चलेगा नहीं. वो बोलेगा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता. तो now listen to this very carefully. How to divide and then rule. Some people say, or some parents say, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेना. Fair enough. Get up at 3. Get up at 10. Doesn't make a difference. Number of hours that you put in your study, or you are awake, full of energy, makes the difference. So let's take an example. Even if you get up at 8 in the morning, or 10 in the morning, or 3 in the morning, let's look at how many hours you are awake, how many hours you will do some extra work. We'll remove that. Let's look at a calculation. If you get up at say 10 in the morning, so it's very obvious that you're not going to sleep in the afternoon because exams sar pe hain, you cannot afford to. So definitely रात के 1-2 बजे तक 1:30-2 बजे तक आप जागोगे. Let's calculate from 10 a.m. in the morning till 1 o'clock or 1:30 or 2 or even 12:30, early morning hours. How many hours do you have? Say 12 plus. It could be 13, 13 and a half, 14, 12 and a half. But it is in any case 10 plus hours that you are awake. So how to divide these 12 hours a day? In a group of 3 hours, divide these 12 hours. So you'll make 4 groups. 3-3 घंटे के 4 आपने स्लॉट्स बना दिए. अब इन स्लॉट्स में आप क्या देखोगे? 3 घंटे का पहला स्लॉट. इस 3 घंटे के स्लॉट में आपने 40+5 वाला फॉर्मूला अपनाना है, या फिर आपने ओवरऑल 2 से 2.25 घंटे पढ़ने हैं और बाकी के आधा पौना घंटा आपने रिलैक्स करना है. छोटे छोटे ग्रुप्स में 40 minutes, 5 minutes, 40 minutes, 5 minutes, 40 minutes, then 10, 15, 20 minutes. Because sorry, obviously आप लंच भी करोगे, ब्रेकफास्ट भी करोगे, डिनर भी करोगे, थोड़ा सा घर वालों से बात भी करोगे, तो all that उसके लिए 1 घंटे का क्वेश्चन is more than enough in the slot of 3 hours. 4 slots in a day. Now in these 4 slots of a day, if you have chosen one subject per day, तो उसमें कितने chapters complete करने, do that. अगर पहले slot में out of the 3 hours you have spent 2.5 hours in completing one chapter which was exhaustive, in the next slot of 3 hours cushion दे दो, study only up to 2 hours. Give some rest to yourself. Feel relaxed. टेंशन लेके नहीं पढ़ने का, लेकिन पढ़ के 100% स्कोर करने का है. So that should be there at the back of your mind. So in order to do that, give cushion, study. 3 hours के slot. It could be first slot आपने मैथ्स किया, second slot you want to do the science subject, do. जैसे भी comfort level है, but एक दिन में you spend close to about 12 hours. Out of these 12 hours, 8 hours productive time towards your study will go. टॉपर्स ऐसे ही करते हैं. रोटी को एक बार में आप नहीं खा सकते, आप ब्रेक करके खाते. Break it into slots. Break it into 40+5 का फॉर्मूला and you'll be successful in this. Here, when we say divide and rule, remember the first thing? Just 10 minutes, condition your brain. तो वही बोल के आपने अपना काम शुरू करना है. 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट. मन को, दिमाग को ऐसे ही समझाना, 10 मिनट, 10 मिनट.
और फिर उसके बाद 40-45 मिनट एट अ स्ट्रेच आप पढ़िए, ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, ब्रेक लीजिए. बिकॉज एंड ऑफ द डे यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी. इट इज नॉट कि मैं 16 घंटे जागता हूं. नो, it is those 8 hours, 10 hours of energy, of passion that you are putting towards your study. It is not about the number of hours that you are awake. कि मैं तो 16 घंटे 18 घंटे जागता हूं. जागने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा. और पढ़ने पे भी हमने समझना है, हमने रटना नहीं है. It is more of remembering things than of mugging it up, right? 16 घंटे जागोगे, सोओगे नहीं, तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी. सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन. सो व्हेन यू आर देयर, प्लीज अंडरस्टैंड, जान है तो जहान है. हेल्थ का ध्यान भी रखना है, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है. एग्जाम्स जो है ना, इट इज फॉर अस, बट द हेल्थ इज फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग फॉर यू. हेल्थ अच्छी है, आप बोर्ड के एग्जाम्स ले पाओगे. बोर्ड्स अच्छा कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, जरूरी नहीं. कीप अ चेक ऑन द फूड दैट यू ईट. Keep a check on your health. Avoid going into a depression kind of a thing, right? Now, quickly, what we'll look at is, again, what these toppers they do. They love to learn. They're not closed. अरे यार ये टॉपिक मत करो, प्लीज मत करो, मेरा सर दर्द. No, you should be open to learn. And these toppers, ये toppers की बताई हुई बातें हैं. They love to learn. They love to explore. They love to look at more of the books, the syllabus, the questions. They never say, I'm tired of this. Stop it. No, they say they are open. Okay, अच्छा ऐसा भी होता है. This is there. Oh, great. ऐसा भी पूछा था. अच्छा इस तरीके से same question asked in 3 different ways. Psychometric test भी आप देखते हो. Same question asked in 3 to 4 different ways और पता ही नहीं चलता. Oh, you have already answered this. So if you are applying your brains, you'll come to know the same question has been asked थोड़ी देर पहले. Love to learn, you'll understand these things. Learn for short period of time, ये भी हमने बात की. 40+5 का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए. टाइम टेबल जरूरी बनाइए, उसकी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है. हमें लगता है कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लीज लुक एट योर स्कूल spends day, 2 day, 1 week to prepare the timetable for the whole year. उस हिसाब से आपकी क्लासेस होती हैं, उस हिसाब से चैप्टर्स कवर करते हैं, उस हिसाब से आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट होता है. सो ब्रिंग दैट टू योर ओन सेल्फ. मेक अ टाइम टेबल. स्पेंड अ डे. इट्स वर्थ. हमें लगता है एक दिन खराब होगा, नहीं. वो एक दिन एक्चुअली टॉपर्स उसको फॉलो करते हैं एंड दे एक्चुअली स्टिक टू द डिसिप्लिन, द प्रोसेस, द प्रोसीजर एंड दे अचीव. दे नो देयर प्रायोरिटीज. मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं. मैं अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूं, उसको पहले ले लो. नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी टेंड टू फॉलो आवर हार्ट, कि जो अच्छा आता है ना, जिसमें मजा आता है, उसको पहले कर लो. जिसमें मजा नहीं आता, उसमें व्हाट विल डू, लास्ट में करेंगे. नो योर प्रायोरिटीज, नो योर सब्जेक्ट, नो योर चैप्टर्स, नो द क्वेश्चन इन दोज चैप्टर्स, एंड व्हाइल डूइंग दिस, उसको हाईलाइट करते चलो. This will help you a night before the exam when you are supposed to take a quick look at the topics, at the highlighted things. Last day सब chapters पढ़ने का time नहीं होगा. So while doing this, know your priorities, keep underlining, keep highlighting, be confident. You are the champion. Feel that you are the champion. You are there, right? You should be confident of what you are talking about. You should be confident of what you are learning. You should be confident of what you are delivering. किसी ने कह दिया, अरे अब ये टॉपिक कर रहा है, छोड़ दे, इससे कुछ नहीं आएगा. Don't get nervous or conscious about it. You should have set your goals. You should know your priorities, know the subject matter, be an expert. Last minute preparation कभी भी नहीं करना. Already जो prepare कर चुके हो, उसको देखो. Last minute किसी ने कुछ कह दिया, दिमाग उसमें चला गया, जो आता था वो भी भूल गया. देखा है, people have seen this, they have made this mistake. I'm pretty sure about it. But
Don't make these mistakes time and again. That's the reason we are trying to reiterate to you. Distraction avoid karo, phone, jada TV, jada music, avoid this. Do not multitask. When you're studying, study. खाना खाते समय भी पढ़ रहे हैं. Don't do that. ना खाना पचता है ना पढ़ाई होती है. Don't do multitasking. Okay? Some people even take the books to the washroom. I don't know. Choice is yours. But I would say this. Relax when you have to relax. Enjoy when you have to enjoy. And study as per the time scheduled by you in the timetable. Right? Understand more. Memorize less. रटते मत रहिए. समझ के करिए. When you know the concept, you can deliver. You can write. आप लिख सकते हो. याद किया एक लाइन भूल गए तो सब कुछ भूल गए. You must have seen that happening during a debate or elocution. Elocution में होता था, you forget a line and you're gone. Right guidance. हमें guidance चाहिए. हर किसी को guidance चाहिए. पर सही guidance हमें देगा कौन? Here I can vouch for it. Nbsc can give you the right guidance. They have that. They have the subject matter expert. They have it with them. They'll give you all the question papers. And these question papers they are created by the CBSE panelists. They have lots of experience over these years. ऐसा नहीं कि अभी पिछले बार से पैटर्न चेंज हुआ तो एक्सपीरियंस खत्म हो. नो, सब्जेक्ट तो वही है, चीजें तो वही है, क्वेश्चंस को और पैटर्न चेंज हुआ है. डोंट वरी अबाउट दैट. सो हियर full marks NBSc is going to give you the extra edge, right? Look at the sample of the previous years question papers. Here again NBSc would come into play. They'll give you a 24-page answer sheet also along with the question paper at a later stage. They'll help you in knowing your capabilities in the All India ranking. So we'll come on to that. Believe in yourself. You are a champion. And keep care of your health. Eat healthy. Be wise. Time, punctual. Assess yourself. Keep assessing. As I said, All India ranking. Again, NBSc will come into play. Set your goals. Set your priorities. Set it in the timetable. Start beforehand. As I started off. Just 10 minutes बोल के दिमाग को 10 minutes बोल के पढ़ाई शुरू कर दो. When you do it, you'll follow the timetable. Things will follow in place. 90% of the time हम start ही नहीं कर पाते. सुबह 5 बजे उठ के करूंगा, 5 बजे नहीं उठ पाए, कर ही नहीं पाए. दोपहर से करूंगा, कर ही नहीं पाए. अच्छा, कल प्रॉमिस. How many times we have made the New Year resolution? पूरा ही नहीं हुआ. 10 मिनट बोलो दिमाग को, कंडीशन करो, start it. Manage your time well. Look at it. Look at the wristwatch. Time yourself while answering the question, answering the papers, even at home while practicing. ये नहीं कि फाइनल डे पे हमने अपने आप को टाइम करना है. Time it from today onwards. Have this discipline of following the timetable, following the routine. 40 plus 5. Exact 40 पे alarm मत लगाओ, but 40 plus 5, 45 plus 5 could also be. But the 40 plus 5 is the best formula to actually understand things better. You should know what are the tips and where you should get it from. कौन सा best material है, reading material, where it can help you, where those can clear your doubts. Don't go in for book materials which will create more doubts, which will give you open-ended questions. No, go in where you'll get solution, you'll get answer. Again, I say, NBSc will give you 24-page answer sheet. So look at it. Look at the things. Kuldeep sir, yes. Sorry to interrupt you. We just want to inform our students also that along with that 24-page booklet also, students can take this Exam Guru and this Super 20 sample papers. So it will also be beneficial for them. I already messaged you, sir, in this regard. Like Super 20 sample papers and Exam Guru question bank, which is being created by Full Marks, and the students can surely take it. And for this particular examination, they will be able to get the answers and solutions and the question bank from that particular Exam Guru question bank and Super 20 sample papers regarding each and every subject of 10th and 12th grade. Fine. Thanks for the update. So here you come to know about it, that Exam Guru question bank is also there. Study material. Sorry?
study material as a Yeah, in study the study material, that we are talking about, ki jo acha study material, and this is one of the best which is available in the market. It's time and tested, right? So इसमें super 20 term के दो sample paper भी आते हैं which can help you actually score marks. It can help you actually clear your doubts that we are talking about. So it's a friend to you. So remember, board exams कैसे होने चाहिए? Friend बना लो, दोस्त बना लो, know in and out, and you'll score 100%. It's not about passing. It's not about 80%. You're looking at how to score 100%. So इसके लिए you need to know the in and out of all this. And see, Exam Guru can help you. Full marks is there. Nbsc is there to help us all out, right? Now, how to divide the question paper and score? Immediately answer the questions that you know first. First come first. पर उसका ये मतलब नहीं है कि you miss out on some of the things and कि बाद में आएंगे और आप भूल गए. टिक कर लीजिए, हल्का सा टिक कर लीजिए. अलाउ नहीं करता बोर्ड, लेकिन पेंसिल से हल्का सा टिक कर दीजिए, बहुत छोटा सा, for your reference, so that you'll have to come back. Otherwise, if you miss it out, you're gone. You lose marks and you cannot score 100%, right? While answering these questions, the ones which you know first, tough question will be there in your subconscious mind. आंसर करते करते कुछ एक चीज आपको याद आ जाएगी. जैसे ही याद आएगी, you'll go back to that. Answer those. Time yourself. How do you want to time yourself? Let me take an example. Say economics का example ले लेते हैं. 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको 2-2 मार्क्स के, तो टोटल मिला के हो गए 10. 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको 3-3 मार्क के, टोटल मिला के हो गए 15 मार्क्स. और 3 क्वेश्चंस आएंगे जो 5 मार्क के होंगे. So now divide your time. पहले 15 minute for reading the question paper. Because the next thing also says read each question twice. Many a time it happens, we read the first couple of words and we think ये आंसर मुझे आता है. आगे क्वेश्चन में ना ट्विस्ट होता है. The word is twisted and क्वेश्चन का आंसर गलत. So avoid this. Read the question twice. तो उसके लिए 15 मिनट का टाइम स्पेयर रखिए. Go back to the tough questions. टिक, छोटा छोटा टिक कर लीजिए जो जो क्वेश्चंस आपने आंसर कर लिए. For God's sake, don't leave any question unanswered. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो you will not get any mark out of this. Board has given marks if a question is answered. Even if you attempt it, you will get mark for it. But if you have not attempted, don't expect anything, and people make this blunder. This is very important. Don't take it casually. You need to attempt all the questions. Don't leave anything for anyone, right? And make sense. Negative marking तो है ही नहीं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो इसको अटेम्प्ट नहीं करते. वो फियर फैक्टर भी नहीं है. डोंट डू दैट. अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, राइट? इंपॉर्टेंट. नाइट बिफोर द एग्जाम नींद ही नहीं आती है, टेंशन इतनी हो जाती है. सुबह एग्जाम है, कुछ हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. डोंट डू दैट. याद करो, टाइम टेबल बनाया, चैप्टर बनाया, इंपॉर्टेंट थिंग आपने अंडरलाइन की थी, राइट? Go back from your textbook. Last day, कोई भी दूसरी बुक्स या कुछ भी पुराना मत करना. रेफरेंस के लिए एक नई बुक आ गई, डोंट लुक एट. किसी दोस्त ने कुछ एक पीडीएफ भेज दिया, डोंट, फॉर गॉड सेक. जो आप पढ़ चुके हो, जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में, प्लीज रिवाइज फ्रॉम दैट हाईलाइटेड. कोई चैप्टर छोड़ना मत. हाँ, कौन से चैप्टर पे ज्यादा स्ट्रेस देना है वो आपने देखना है, राइट? इंपॉर्टेंट थिंग्स को आपने पहले ही अंडरलाइन कर लिया, मार्क कर लिया, व्हाट वी स्पोक अबाउट इनिशियली. बिफोर यू गो टू स्लीप फॉर द डे, सारा एक बार टच बेस कर लेना. Same you can do probably by getting up early, an hour or 2 hours early the next day before going to the exam. WhatsApp पे कुछ भी ऐसे पीडीएफ्स आए, कुछ भी क्वेश्चंस आए लास्ट मोमेंट की, ये पक्का आने वाला है, मुझे पता चला है, तू भी इसको पढ़ ले, मैंने पढ़ लिया.
Don't go in for that. Don't unnecessarily tax yourself. Don't confuse. Mobile ko un dono mein dur rakh dena. Okay. Even you see cricket, you watch cricket. When the players, they are about to take a match, they are not allowed to use the phone. They don't even read the newspaper. Your thought process might get jinxed. Don't do that. Don't do that. Don't get confused. Eat healthy. Don't sleep empty stomach. It can lead to more trouble the next day, right? Sleep on time. Have plenty of sleep. Otherwise, you'll feel sleepy in the examination paper. And while answering, if you feel sleepy, if you feel dizzy, you'll tend to lose mark. जो आता है वो भी भूल सकते हो, गलत हो सकता है, right? Sleep on time. Relax yourself. Don't overtax yourself. Don't burden yourself. बड़ी अच्छी चीज है. It's okay to feel tensed. Depression में नहीं जाना, that's something different. But थोड़ी टेंशन है, डर है ना, होना जरूरी भी है. Our teacher used to say, कल एग्जाम है, आज टेंशन है ना, इंपॉर्टेंट भी है, वो टेंशन होनी जरूरी भी है. Leave that. होने दो. Be happy because you are worried about the exam. But don't get tensed. That will lead to depression. Right? So this is how the night before your exam should actually go. Do not tax yourself. Do not overburden. And yes, do not watch too much of entertainment or movie the previous night. It might lead to some other consequences. Keep a track of yourself. Something very important. We started off with this also. Unknowingly mistake. पता है ये गलतियां नहीं करनी, फिर भी हम करके आ जाते हैं. फिर बोलते हो यार, I knew ये नहीं करना चाहिए था, still I did it. और उसमें क्या होता है? कॉल आ गई है कि कम इनसाइड द रूम. लगे वो पढ़ रहे ये देख ले. इमीडिएटली दोस्त ने बोला, तूने ये वाला देखा? नहीं यार, मैंने नहीं देखा था. और ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की. टेंस हो जाएगा. अंदर जाते क्वेश्चन पेपर आया और एकदम से सब कुछ भूल गया. These things happen. Don't do that. Don't do this. Don't keep reading till the last minute. Don't do it. जितना पढ़ लिया, 1, 1.5, 2 महीना, साल भर भी आपने पढ़ाई है, रिवाइज किया है, more than enough. More than enough. Whatever you have done, leave it. Leave up to that kind of preparation, right? As I said, many a time it happens. First दो word question के पढ़े और आंसर करने लग गए. बाद में देखा कि ओहो, क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया. Right? Read the question very carefully and very proper. Example, मैथ्स का क्वेश्चन है, आंसर आ गया 24. 24 किलोमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या यूनिट है वो लिखना भूल गए. You might end up losing marks, even though you are 100% right on the calculation, on the numbers. But on the unit front, 24 kilometers, 24 centimeter, 24 inches, 24 rupees. Do not forget the units. Same with physics and other subjects too. छोटी छोटी चीजें हम कई बार शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं. Like, you know, we are very habitual on writing with on the chat. तो चैट वाली लैंग्वेज उसमें आ जाती है, which might end up on the losing side. Avoid such things. Avoid such things. The questions that you have skipped earlier कि मैं इसको बाद में करूंगा. You remember हमने कहा था एक छोटा सा हल्का सा पेंसिल से मार्क करना. पेन अलाउ नहीं करता बोर्ड. हल्का सा पेंसिल से मार्क करना, just for your reference, for your knowledge, so that you'll get back to these questions. Leave that space. अगर continuation में leave 4-5 line space or 6 line space or 2-3 line space depending on the question asked.
कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से जगह छोड़ दीजिए, कम बैक टू इट. इफ यू हैव नॉट मार्क्ड इट फॉर योर ओन सेल्फ, लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो यू माइट थिंक, क्योंकि क्वेश्चन तो पड़ा हुआ था तो आपको लगेगा शायद मैंने आंसर कर दिया. दैट माइट अगेन एंड अप ऑन दी लूजिंग और लो स्कोरिंग. Remember that you have to come back to that question. You'll have to make an attempt to it, because as I said, and I have marked it with an asterisk, don't leave any question without attempting it. I have discussed this. बिल्कुल नहीं छोड़ना. Attempt. You'll score. You might not score 5 out of 5. You will score 3, 2, 4, better than 0. Attempt. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी छोड़िएगा बात. Some of the things these are some of the things we actually do it. Practically we do it. We listen to the students, we've listened to the seniors, we listen to the teachers. Still we do it. Request, think over this. It will help you earn extra marks. But if you don't, you might lose up. Even a mark lost is 99%. So where you can score 100%, don't lose for a very silly mistake. And then the major problem with all of us is, बाहर निकले नहीं कि फ्रेंड्स ने बुलाया नहीं और पेपर लग गए डिस्कस करने. तूने क्या लिखा? तूने ये लिख दिया, अरे इसका ये होना चाहिए था. And then you, oh my God. And then what happens? चलो जो हुआ सो हुआ, बट अगले दिन का या नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आपने एक गलत बेस तैयार कर लिया. Don't do it. Whatever you have done, it's done. Move out of that, because you have to prepare for the next subject. You have to prepare for the next day. You have to prepare for the next exam. Don't waste your time discussing with anyone. You are a champion. Believe in yourself. Be confident. What you have answered, you've actually answered. So don't waste your precious time on this, right? I'll give you a few more unknowingly mistakes ke tips. There are some keywords, usko underline kar do. We forget. Say science subject, where you're supposed to make a diagram. We make the diagram, at times we forget to label them. जल्दबाजी में बना दिया हमने, perfect. थोड़ी सी labeling रह गई, we end up on losing marks. At times, say geography, where you get the map, attach it where the question is. Attaching at the last, if it gets, the stapler goes off, or you have not tied it up properly, you might lose on what you have scored. Some of the things we need to keep in mind. The command words that we often keep in mind, like the describing word. Say, describe is different from list. So when you are going through the question, क्या लिखा हुआ है? Describe this scenario or list the consequences. So describe and listing both are different. Similarly, give or write advantages of or distinguish between this and this. Both are different. हम देखते हैं distinguish between this. ठक 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 शुरू हो गए. पूछा था कि give advantages of this situation. So you need to be very careful. छोटी चीजें हैं, unknowingly हम ये गलतियां करते हैं, we lose mark, and then we say, मैंने तो सही आंसर किया था, I don't know what happened, what went wrong, why this happened. So ये एक छोटे छोटे ट्रैप होते हैं. Be careful, be smart, be confident, and when you read the question twice, I've repeated this time and again, when you read the question twice, you will not make these mistakes, right? Keep a track of these things, how you can
keep command, how you can look at it and time all the questions beforehand. As I said कि economics में अगर एक question है जिसके 2 marks हैं, don't write 10 points for that. 2 marks है, 4 points are good enough. जहां पे एडवांटेज पूछा है, सिंस यू नो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आप पढ़ के आए हो तो डिसएडवांटेज भी साथ में लिख दिया. डोंट डू दैट जस्ट बिकॉज यू नो दैट. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इफ दे हैव आस्क्ड यू कि give advantages, तो write only the advantages. If it is a 5 marks question, write accordingly. Don't write in points. 5 points में लिखे, you might lose a mark. Write accordingly for that sufficient question. 2 mark का है, fair enough. Write short. उसमें ऐसा नहीं करना कि 2 mark का लेकिन पढ़ के ज्यादा आया तो एक पूरा essay लिख दिया. Don't do that. You'll waste time. फिर आपके टाइम के बाद में प्रॉब्लम आएगी. Once you are through with everything, रिवाइज करते समय पता लग गया जो क्वेश्चन आपने इनिशियली छोड़ा था उसको अभी करना है. गेट डाउन, डोंट लीव एनीथिंग. 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने, लिख दीजिए. 2 मार्क का है, एटलीस्ट राइट 4 पॉइंट्स. पेन यूज ब्लू एंड ब्लैक एज यू हैव बीन आस्क्ड टू, राइट. कीप मेन कीवर्ड और उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए. जहां पे लगा इसको सर्कल करना, सर्कल कर दीजिए. जहां पे लगा यूनिट्स लिखनी, सेंटीमीटर, रुपीस, वो लिख दीजिए. फाइनल आंसर है उसमें बॉक्स डाल दीजिए. सो दिस विल एक्चुअली हेल्प द एग्जामिनर. जब वो देखेगा तो जल्दी उसकी नजर में आएगा और आपको नंबर्स अच्छे मिल सकते हैं. Especially with maths and other subjects, you need to draw a margin on the left hand side, because once you attach a supplementary sheet to it, what happens, जो inner side पे आपने लिखा है ना, वो सारा visible नहीं होता है. Things might get into the ceiling pack. ठीक है, so remember, maths कर रहे हैं, आपने rough work का एक column बनाया, strike it off, just strike it off at the end. And especially अगर आपने कुछ लिखा है, whatever you have written, and when you are revising it, you think कि नहीं, this should not be the one. I've written a wrong point, I need to correct it. Don't scribble, don't cut it, just put a line across and then write the right answer. Often student, they have lost marks because they made it very, very untidy by scribbling and scratching. और पता लगा उसके बैक साइड पे भी जो लिखा था ना, वो भी आंसर खराब हो गया. जस्ट पुट अ स्ट्राइक, मूव अहेड, राइट. ट्रिग्नोमेट्री है, उसका अगर आपको बोला इसका टेबल बनाओ, तो उसका प्रॉपर रेफरेंस दे के लास्ट पेज का उसका डायग्राम बना दो. राइट देयर क्वेश्चन नंबर 5. अगर पीछे से कैरी ऑन भी हो रहा है, स्टिल राइट इट, डजंट मेक अ हार्म. बट यस, यू विल नॉट लूज मार्क by you yourself unknowingly कि अच्छा इसका था, नेक्स्ट शीट में मैंने कर दिया था, राइट. ग्राफ पेपर है, ग्राफ शीट्स है, उसके स्केल पे मार्क करना जरूरी है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस एक्स एक्सिस में क्या चीजें लिखी थी, you have to write those points. We forget the units again there on the x or the y axis. So these things might help in losing some marks, and this step might help gain those extra mark which others might lose. Always read the question. जरूरी पढ़ो, पैसेज मत बना देना, ठीक है. Once you have completed the question, the answer to those questions, leave a line, leave proper space. Don't write extra information with where it is not required. You might end up losing mark for some of the grammatical or some of the other mistakes. जितनी इंफॉर्मेशन मांगी है उतना ही लिखिए. As I said, advantage पूछे तो disadvantage भी मत लिख दीजिएगा, और disadvantage पूछे तो don't start writing the advantages also. There are 2 advantages to this situation, this and this and this. Just because you know, don't write that. Fine. At times, we again tend to lose on this. So once, if you go through the exams that we are talking about, the Guru question bank,
NBSC, which is giving us the practice to all this stuff, which I'll share it with you in the next couple of minutes. Make yourself perfect. Get yourself enrolled. There are panelists from the board, vast experience. They'll give you the answer sheet. They'll help you out in every possible thing, which we'll share it in a couple of minutes time from now. This will help you score the extra edge, right? As I said, I repeat it once again, don't write the SMS language. We tend to do that, which is not proper. So I'll share with you about Nbsc that we are talking about. Just give me a second. I'll. No problem, sir. You can take your time. I think now we are going to discuss like how what we are offering in Nbsc. Yes, we'll be discussing about what we are offering in Nbsc. And after 15 minutes, we are going to take the queries, sir. Actually, we are having some live queries as well, and a few queries regarding the same, like how to prepare and what are the things to be done. Okay, fair enough. So what we'll do is we'll quickly have a look at the Nbsc. We are talking about how it's going to be beneficial. Ashutosh, just confirm if it is yes, sir. Yes, visible. Yes, sir. So that I can Nbsc, move it. full marks, Yes, Nbsc, full National way. Board of School Examination, Term 2. Exactly. We all know that the term 2 is there, and how Nbsc can be very helpful to all of us. Many students, they have scored good marks even in the term 1 by using Nbsc. I would recommend it to you. And let me tell you once, if you also go through the same experience, you'll recommend it to others. Right? So go through it. Full marks, Nbsc, that's the National Board of School Examination we are talking about. Right? So isme hai kya? What's there in for me? Class 10 and 12 के term 2 के आपके पास सब कुछ मिलेगा. Pre-board exam, as you can see, for the term 2, that's for the class 10th and class 12th. So it is there, Nbsc 2021. So here you get this opportunity to get the real-time experience of the CBSE board, and the questions for the pre-board, they're created, that's structured by the panel of experts that we talked about initially. Also during the discussion, we discussed the eminent panelists who are there on board with Nbsc, the National Board of School Examination, the full marks that we talked about, how to make the best use of the exam, the exam guru, we talked about that also. So here the panelists who are there have lots of experience. They not only help you with the question paper, but yes, they'll help you in the evaluation of the question papers also. So who are those? We can have a look at them. The advisory council, it consists of the retired AS, Mr. Umesh Tyagi. Then we have the ex-secretary to the CBSE, that's Mr. H.R. Gupta. And then the former deputy secretary of CBSE, that's Neha Sharma. So they all are there on the advisory council, and they are the panelists to it. So just imagine the experience that flows into what Nbsc is offering you, the full marks is offering to you in the term 2. Then we have the former director of the American Library, that's Ms. Kala Anjum Datta. And then we have from professor from NCRT, Professor Dinesh Kumarji, and then Dr. Ravi Prakash Gupta is also there. He was in the Ministry of HRD, retired as professor and regional director. So he's there. Then we have Dr. Madhuri with us as a consultant. She's an educationist. So eminent people are there with us. So just imagine the kind of experience, the first-hand experience that you're going to get.
by subscribing it on with the Nbsc, right? So full marks Nbsc is offering you what? Class 10, the subjects are there. So we have all the subjects like we discussed. You remember we discussed the timetable, how these subjects are going to help you in that. English, language, literature, science, maths. Then we have the standard and the basics. We have the social science, Sanskrit, Hindi, AB, and information technology, IT. So that's there for class 10. So similarly, we have the subject wise for commerce, for humanities, for science, as we have already discussed. So everything is there for all the students. You're a commerce student, we have maths, applied science, accountancy, commerce, economics, physical education, business studies, and English core. Similarly, for humanities, we have all the subjects: history, geography, pol science, English, we have science, we have economics, we have physical education, and science, we've already seen that. So everything is there for all the students to score that extra edge. You might score 90, you might score 95, but converting those 90s into hundreds, converting those 80s into 90s, and converting those 90s into the 95, see, the Nbsc is definitely there to help you out. And with those eminent panelists on board, and with the kind of experience and with the kind of help that Nbsc is always offered to all the students, you need to have a relook, be there with Nbsc. Some of the unique features we already discussed about: the 24-page answer sheet that's going to be there with the tips, and this will actually boost your confidence. We spoke about being confident. How can you be confident? Answering these questions, taking these tests. And in this, as you can see on your screen, 3 sets of question papers are there, and these are designed by the experts, the CBSE experts. They are doing it. So remember, it's going to be a hand-on experience for all of you. You get the complimentary ebook for this. You get live seminars, the do's and don'ts, the right reiteration of this, and that's being done from the experts. You'll get a mark sheet as you get it for the board examination, the admit card. They'll prepare you. It will not be the first time when you are entering the 10th or the 12th board examination that when you might be nervous, but when you take it out here with Nbsc, you'll get the first experience and you'll be very confident on the final day. So here you even get a participating certificate. That will be given to you through the school, I believe. We can talk more about this by Ankur sir and Ashutosh ji once we are through with this. As I said, the quality checking of these question paper is done, physical checking is done, and you'll be informed about it. And the best of the answers will be even posted on the social media for others and you also to boost upon, and they can look at your answers. So you get a physical copy of for this. All India ranking that is there when you see yourself, how you have placed yourself, your goals, your priorities, and then once you see your all India ranking, when you have appeared with the full marks Nbsc, you come to know where you are and where you want to go. That extra edge will take you to that place. Otherwise, when you prepare for yourself, you might not know where your standing is. You might not know in the all India ranking what's your rank. You might only take a guess, but here you get a live first-hand experience where your standing is, how much extra you need to put in. So highly recommended full marks Nbsc. As you can see on the screen, most of the question papers, they are from these papers only. I have told you in the presentation also. So here, the final thing you can see on your screen, more than 1 lakh students, they've appeared in the term 1. Response was tremendous. They have achieved. Have you? Think about yourself. If you want to score, if you want to get that extra edge, if you want to get the ranking for yourself, if you want to know where you stand, where you want to go, get enrolled with Nbsc today itself. You might ask this question. Why Nbsc? Kyun bhai? Why? What's there?
plenty of things to share with you. First and the foremost, as we talked about, all India ranking, subject-wise rank among the participating schools. So those schools who are participating, you need to get back to your school, tell them, and NBSC will be there. They'll help you in the subject-wise, school-wise ranking. You even get scholarships worth 10 lakhs of scholarship to the top 100 student. Are you one of them who's going to get this share from 10 lakhs? Who knows? You might be. Go for yourself. Real-time experience from the CBSE board examination. You'll get it. Help students identify and boast about the confidence for your exam. The first-hand experience before you enter the final venue for your board examination. The result for which you have appeared will be there with you within 1 month from answering. Model answer sheet will be available even on the website, as I told you. So this is one of the reasons why you should actually be with NBSE, right? So the dates are there, the dates are out from the 1st of March. You need to pen it down. You need to mark these dates. Very important. This can actually help you score that extra edge, that extra mark. Even 1 mark can take you from 99 to 100. So you want to score 100%, be there. Keep a track, make a note of these dates in your calendar. 1st of March, 3rd of March, 5th of March, 7th, then 8, 9, 10 at a go. So you have the subject code, you have the subjects. 1st March, English language and literature will be there. 3rd March, science. Then comes standard, maths standard and the maths basic. That's on the 5th of March. Social science is on the 7th, and then you have in continuation 8th is Sanskrit, 9th is Hindi A and Hindi B, and then the IT, information and technology. So, well, you can see a final asterisk. These dates, they might change, but as of now, these dates stand confirmed, right? So that's another reason for you to prepare yourself. By 1st to 10th March, you'll have enough time before you appear for the final board examination. You'll have enough time to gear up, to make up for yourself. You'll have enough time to prepare your mind, to prepare the final answers, to go through your answer sheet. You get a practice platform which is required, and 1 lakh students have already done that in term 1. This is term 2. You need to be there if you are not there. As I said, the pre-board date sheet for class 12, that's also there. 1st to 10th of March. I'll not go through subject wise. It's there on your screen. Take a screenshot, log into it, and you'll know the dates. 1st to 10th of March. Mandate these dates, block your dates, block your calendar, appear for it, take the first-hand experience, and you will score more in the board examination. It's going to help you a lot. That's all I can recommend. You need to look at it. You need to take that extra step to get a first-hand experience for yourself. And tomorrow, definitely you will vouch to the other students, they should go for this. This is covered by Hindustan Times, the Daily Hand, the Print, and the Z5, and many more of the media houses. So understand the importance of NBSE full marks. This is the sample NBSE mark sheet. You'll get it as we discussed. It's going to be there. Then 24 page answer sheet will also be there. Subject matter experts are there. All India ranking is there. This is how the final mark sheet will look like. If you look at the last column where it says result pass, all India ranking will be mentioned. You would know where you stand. You would know what is the leap you need to take. You would know what is the extra mile that you have to go in the next few days. 1st March to 10th March, block it. And keep yourself
available for the final platform before you answer the board exam. We talked about rewards and recognition. 10 lakhs worth of scholarship we discussed. This is how you can get. Those who score rank 1 to 10, they'll get gold medal and 10,000 rupees worth of scholarship. Good indeed. So 10 of the top 10, first to 10th position, you stand to earn this money. Not only this, you'll know where you stand. That's more important. But scholarship, you can boast about yourself. It will help you realize where you are, and it will boost your confidence. 11th to 25th rank, 5,000 rupees of scholarship each with a silver medal. And then you have the bronze medal for those who rank between 26th to 50th. And they also get a scholarship worth 2,500 rupees each. From 51st rank to the 100th rank, you have 1,000 rupees of scholarship and also a certificate of commendation. In addition to this, you have the school topper certificate. Depending on the schools those participate, you have the certificate of participation, which everyone will get, and then you'll get the rank certification also, what your rank is. Now, this is why, and this is how Nbsc is different from others. We've discussed most of them. Let's look at it quickly. 3 sets of question papers. That's based on the CBSE sample papers. We discussed this. Subject matter experts are there. They'll evaluate it physically, give it to you. All India ranking, we saw that in the mark sheet. We discussed this time and again, where you stand, where you want to go. The 24-page answer sheet with tips to score in the exam. This is going to be of tremendous help to you. And obviously, the complimentary e-book, जिसकी हमने बात की थी, सब सब्जेक्ट्स की आपको मिलेगी, ताकि आप फाइनल प्रैक्टिस जो है वो कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए. Then a webinar on do's and don'ts in the board examination. Very useful tips on this, and it will be done by the renowned CBSE experts. जो भी टॉप करेगा, we saw scholarship भी मिलेगी, certification भी मिलेगा. At the same time, उनकी आंसर शीट जो है वो भी दिखाई जाएगी. टॉपर मॉडल्स आंसर शीट. It will be there on the social media that we discussed. It will be there on the website. It will be there with the school. You can boast about your answers. This is how a topper writes the answer. And this is how Nbsc can actually take you from that level to the next level and help you score those extra marks. I told you, converting 80s into 90s and 90s into 95 and 95 into the 100. And remember, today we are discussing about how you can score 100%. It's not how you can pass this exam. It's how scoring 100%. And yes, your friend Nbsc Full Marks can help you achieve that. This is all from our side. I'm pretty sure you must have plenty of things to ask for. We have some of the panelists around with us. We have Ankur sir with us. He's also there. So I'll throw it open. I'll give it to Ashutosh. And if you can help us around with Ankur sir there himself with us today. And we are there. So, Kuldeep sir and Ankur sir, welcome. And again, we are having some queries regarding the this particular session against the Kuldeep sir. So we want you to answer first regarding the query from the students. Like first query is, which criteria should be used to make a studying strategy? Great. So interesting question. What is the criteria? It depends from student to student. All the students cannot have one particular criteria, right? Because you see, if I'm a student of say class 10 and there are 30 others in my class, maths could not be the best subject for all of us. It is individualized. It is not generic. So when it is on an individual side, the individual has to decide. We discussed about how to plan the timetable
how to block the number of hours, how to segregate the time, how to segregate the days as per subject, and how to look at the chapters per day with the number of days in hand. But if I'm weak in maths, I need to put those extra hours, those cushion. If I'm very good in English, that doesn't mean I'll give the first hours to English and maths at the later stage. No, that will be a wrong strategizing. I hope I've answered that. Yes, sir. Soumya, I made you allowed to talk. If you have any query, you can ask to sir directly, or let's move on to another question. Her question is how to reduce our stress or anxiety during the exam period. Yes, very important. देखो हमने हमने अगर कल सुबह की फ्लाइट भी पकड़नी तो एंजाइटी होती है, तो वो जो खुशी वाली एंजाइटी होने दो, वो जरूरी भी है, हम इंसान हैं. यू कैन नॉट से कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए. यस, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए. और टेंशन किसको होती है? जिसने पढ़ाई नहीं की. टेंशन उसको होती है जब हमने कहा ना, जिसने स्टार्ट ही नहीं की. आई माइट बी वेरी गुड एट प्लेइंग कैरम बोर्ड, बट मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया खेलना. मैं जीतूंगा कैसे? मैं चैंपियन कैसे बनूंगा? एंजाइटी होने दो, डिप्रेशन ना होने दो. और उसके लिए एक ही तरीका है, प्रिपेयर वेल इन एडवांस, कीप दैट टाइम पीरियड. एंड Ashutosh, you'll agree with me on this, and Ankur sir will also agree. That's the reason NBSC आपको पहले से ही वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, अपीयर फॉर दिस. दिस इज वेरी मच ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होंगे. तो वंस यू अपीयर फॉर दिस, आपके फाइनल डे एंजाइटी कम होगी. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट यू आर टुडे, राइट? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for enlightening us. So I really want to join as a Ankur Gupta, director of NBSC. So any questions regarding NBSC, I would like to answer that also. सर एक क्वेश्चन है जो सब बच्चे पूछते हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश स्पेशली इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड इन हिंदी, हाउ टू स्कोर 100%, क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आती है काफी, स्पेशली इन दीज सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. Before that, Kuldeep sir, please आप अपना screen share off कर दीजिए. I have to share one thing with the students. Okay, so the screen is off. Yes, sir. Okay, so Ankur sir, very interesting question that you have put across. और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये चीजें रहती हैं कि मुझे 100% मिल जाए, मैथ्स में मिल सकते हैं. I can agree with you on it. हिंदी में 100% बहुत टफ और बड़ा ही मुश्किल होता है सर. और सिमिलरली अगर आप देखें तो इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं देयर तो यू कैन स्कोर, बट जहां पे लैंग्वेज आती है, यस, चैलेंज एक रहता है सर. Especially with the passages and जहां पे MCQs हैं, ठीक है, जहां पे मार्क्स होते हैं उसको टिक करने, there you can score 100 out of 100. But where language comes into, where grammar comes into, 100 challenge रहता है. But yes, you cannot rule out कि nobody is. सर मुझे इसका एक CBSE एक्सपर्ट ने जवाब दिया था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो क्या हुआ था हमारे साथ, जब हम ये क्वेश्चन पेपर्स तैयार करवा रहे थे अपने CBSE एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि मैम, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि मैम हाउ वी कैन स्कोर इन लैंग्वेज सब्जेक्ट, स्पेशली इन हिंदी और इन इंग्लिश. तो दे टोल्ड मी कि आप एक काम करिए कि 2 नए वर्ड्स डेली लर्न करिए. आज से कोई भी दो वर्ड्स आप लर्न करिए, and it should be a tough words like anything, example jabber or fabricated or conventional, travesty, something like new words which you haven't heard about that much in that, and use that, try to use that word in your language when you write any answer like passage or anything. तो उससे क्या होएगा कि once they see the language you are using and once you will learn those words,
then obviously teacher will give you more marks on that. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग दिस। एंड क्योंकि वो लैंग्वेजेस वर्ड ऐसे है कि जो नॉर्मल बच्चे यूज नहीं करते थे, कि नॉर्मल इंग्लिश सबको आती है, बट वंस यू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, डिफिकल्ट टू स्पेल एंड डिफिकल्ट टू यूज इन द सेंटेंस, if you will use that words in your regular sentence or use that spelling, so try to learn 2 words daily from now onwards till the board examination. You will have a tremendous vocabulary till that time, and try to use those words in the sentences, and definitely you will score much higher, or total 100% you can also score. तो ये एक सीबीएसई एक्सपर्ट ने शेयर किया था, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट ऑल्सो। सर एक और उन्होंने मुझसे एक चीज शेयर करी थी जो मैं सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि आपको कोई भी आंसर जो है खाली नहीं छोड़ना है। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑल्सो, इफ यू डोंट नो द आंसर एट ऑल, देन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको कुछ लिख कर आना है उसके अंदर फॉर श्योर। चाहे आप क्वेश्चन को दोबारा लिख दीजिए उसके अंदर, आंसर के अंदर लैंग्वेज चेंज करके, या आप कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से लैंग्वेज लिख दीजिए। ट्राई टू राइट समथिंग, बिकॉज आपका क्वेश्चन पेपर कहाँ पर जा रहा है चेकिंग के लिए, यू डोंट नो, एंड एट व्हाट टाइम द एग्जामिनर इज चेकिंग द पेपर, यू डोंट नो। बट यू डोंट हैव टू ब्लैंक द क्वेश्चन, क्योंकि ब्लैंक करने के बाद तो जीरो है ही ना उसमें, बट स्टिल यू कैन स्कोर एनीथिंग। उससे रिलेटेड आप लिखेंगे बहुत अच्छा है, उससे रिलेटेड नहीं आता है तो रिपीट द क्वेश्चन इन द आंसर और एनीथिंग एल्स व्हाट एवर यू लाइक। तो ये 2 चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। एनीथिंग रिलेटेड टू, जी अंकुर सर, एक क्वेरी और आ रही है हमारे पास कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, लाइक यू नो कि एनबीएससी अगर हम रजिस्टर करते हैं तो अगर स्कूल से ना जाके हम डायरेक्टली एनबीएससी में रजिस्टर करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? व्हाट इज द प्रोसीजर? डायरेक्टली आप 15th मार्च के बाद व्हाट वी आर रिलीजिंग दैट फॉर जनरल मार्केट, जस्ट वंस द एग्जामिनेशन विल बी डन इन ऑल द स्कूल्स आफ्टर 15th March, then only these question papers and answer sheet for practice will be available in the general market on Amazon, on Flipkart, that by the name of Toppers Kit. So वो आपको 15 मार्च के बाद मार्केट में मिल जाएगी। You just go buy that Toppers Kit from the market itself. It will be around 250-300 rupees, जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स, 5 आंसर शीट्स सब मिलेंगी। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर जनरल यूज एंड चेक इट बाय योर ओन टीचर और बाय योर ओन थिंग, लाइक बाय योर ओन, इफ यू हैव अ होम ट्यूटर और समथिंग। बट वो आपका, हम उसमें वो वाला एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे जो हम अभी एनबीएससी में दे रहे हैं। दैट इज ओनली फॉर द स्कूल्स विच इज डायरेक्टली इनरोलिंग विद अस फॉर द एनबीएससी। So it is our request to the students that you can ask your school management also to conduct NBSC in your school premises if you are really interested in if you want a board experience, then it is we request all the students to conduct in the school itself. That will be helpful for the student. We have already registered more than 200 schools already registered with us for the term 2. और भी schools हमारे पास आ रहे हैं. So it's a keep going process till 28th of February. And then from the first week of March, examination will begin. So you can, so students, I think your answers you have received, that you can ask your coordinators, HMs and principal ma'am in और order अगर वो नहीं भी to कराते, arrange NBSC examination. अगर स्कूल नहीं भी कराता तो 15th of आपको ये क्वेश्चन से आर मोर इम्पोर्टेंट। सी आपको प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी है, तो दीज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आपको मिलेंगे, और उसके जो आंसर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आफ्टर 30th of March. सो आप 15 मार्च के बाद मार्केट से आप ये किट लेकर खुद प्रैक्टिस कर अपने टीचर से चेक करवाइए। चेक कराने के लिए अगर आपको आंसर चाहिए, दैट आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज nbsc.org.in. और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वी हैव सुपर 20 सीबीएसई सैंपल पेपर्स। इसमें क्या होता है, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स रिलीज कर रहे हैं 14 जनवरी को, तो वो हमने दिए हैं इसके अंदर, और साथ में 5 प्रैक्टिस पेपर्स दिए, दैट इज सुपर 20 प्रोडक्ट ऑफ ओनली फुल मार्क्स, एंड वी हैव एग्जाम गुरु क्वेश्चन बैंक एज वेल। ओके सर। कुलदीप सर, एक लास्ट क्वेरी है, ये बहुत कॉमन क्वेरी आ रही है, एक बार और थोड़ा सा आप जस्ट 2 minutes इस पे इलैबोरेट कर दिए ताकि बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस हम बूस्ट अप कर सकें। दे आर आस्किंग लाइक हाउ कैन स्टूडेंट्स डील विद एग्जाम नर्वसनेस एंड एग्जाम स्ट्रेस इवन दो दे आर प्रिपेयर्ड? Okay, so I'll take on this. और जैसे अंकुर सर ने बताया, तो yes, fully agree कि I'll touch base on that and then I'll come on the exam nervousness
क्वेश्चन कि ग्रामर और स्पेलिंग्स इसमें उतना मैटर नहीं करते जितना कि वोकैबुलरी मैटर करती है. एंड यू वेरी राइटली सेड the best thing to do is learn 2 words, and that will actually help you boost up your vocabulary, and that will give you the extra mark. And this is the reason why people become very strong in while they are using the verbal language, yeah, right? And this will only help you in your writing skills. It will develop it better, and you score that extra edge on this. And as far as the answering the all the questions are concerned, I had marked it specially with an asterisk. और जो अंकुर सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा, don't leave any of the questions. Now coming on to the query that has been raised, कि how to overcome the exam nervousness. Yes, again I'll repeat, stress, nervousness ये तब बढ़ती है जब हम लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लग जाते हैं. जब हम फ्रेंड्स का फोन रिसीव करते हैं और एक फ्रेंड ने कहा तुमने कितना कर लिया, अभी तक इतने चैप्टर्स नहीं हुए तुम्हारे, क्या करोगे? एंड देन दूसरे से बात हुई, पता लगा उसने भी कर लिया, तो यू स्टार्ट गोइंग इनटू अ शेल. तो व्हाट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई विल रिपीट इट अगेन, इन दिनों में स्पेशली एग्जाम के टाइम पे अगर फ्रेंड से बात भी कर रहे हो तो डिस्कस ओनली अबाउट द डाउट्स, टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक NBSC is giving the platform जहां पे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो when you enroll through the school in a proper process. But unfortunately, if you listen to some of your friends and then compare it कि मैं कहां पे हूं, तो वो नर्वसनेस आएगी which can lead to breakdown before the exam also. Remember one thing, friend, here you are competing with your own self. You are not competing with anyone else. So if you want to score 100%, look at it. You are the champion. A champion can never be nervous. N number of times Virat Kohli enters the field, even if he scores a duck, he is never low on his body language. So you need to be very confident of what practice you have done. Keep practicing. When you have done that perfectly, your confidence will boost up. And this happens over a period of time. रोज प्रैक्टिस करिए, रोज टाइम दीजिए, नर्वसनेस नहीं आएगी. You will overcome it. Try doing it. You'll find the difference yourself, man. नहीं, कुलदीप सर ने बिल्कुल सही कहा. जैसे कुलदीप सर कह रहे थे अभी पीछे कि अपने माइंड को आपको बेवकूफ बनाना है, दैट यू हैव टू डू रेगुलरली. 3 इडियट्स में भी आपने देखा कि मतलब दैट द माइंड इज द मेन की फॉर सक्सेस. तो आपको माइंड को बोलना कि यार 10 मिनट पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट. तो ये सर की सबसे अच्छी बात थी कि आपको माइंड को सबसे पहले कंडीशनर करना है. तो दैट यू हैव टू गो, एंड वंस यू विल गो विद दैट फ्लो, then definitely you will learn many things, many new things also, for sure. Kuldeep sir, last question for today's webinar is, case study and long unseen passages takes much more time than needed to answer. How could I answer those questions without wasting much time? I repeat, case studies and long unseen passages takes much more time to answer. Then how could I answer those questions without wasting my time in the examination? उसका मैं भी थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, फिर कुलदीप सर विल एलोबरेट दैट. इसमें दैट इज आपने केस स्टडीज एंड जो लॉन्ग टर्म आप जो बता रहे हैं आंसर्स, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी है. इट मींस इफ यू विल प्रैक्टिस दैट थिंग फ्रॉम एनी प्रैक्टिस पेपर्स एंड एनीथिंग, देन यू विल स्टार्ट रिड्यूसिंग योर टाइम. आप एक बार उसको प्रैक्टिस रेगुलरली करिए, जिसमें आपको लगता है कि यार इन क्वेश्चनों में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है. वंस यू स्टार्ट रीडिंग ऑल्सो, तो आपको उसमें लर्निंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उस क्वेश्चन की, एंड देन यू विल ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन विल टेक लेसर टाइम फॉर दैट, फॉर श्योर. तो उसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे, जैसे मैं अभी एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे 10 मिनट लगते हैं, आप दूसरी बार करेंगे तो उसी को 9 मिनट लगेंगे आपको. तीसरी बार करेंगे हो सकता है आप 8 मिनट में कर ले, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सिमिलरली विद द केस स्टडीज. अब केस स्टडीज के जो लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं या लंबे लंबे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली बेसिस पे, तो अभी हो सकता है आप 5 मिनट में पढ़ रहे हो उसको, तो देन यू विल कम फॉर द पॉइंट कि 4.5 मिनट में आप पढ़े, फिर आप 4 मिनट में पढ़ने लग जाएंगे.
क्योंकि आप सीधा बोर्ड में जाके पढ़ेंगे तो आपको 5 मिनट क्या बल्कि 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक एंजाइटी भी होगी, एक टेंशन भी होगी। बट उस तरह के प्रैक्टिस करे हुए क्वेश्चंस आप रेगुलरली करेंगे अपने, तो डेफिनेटली आपको वहां पर 4 मिनट 3 मिनट में आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इस पैसेजेस को कैसे पढ़ना होता है, हर पैसेज के पढ़ने का तरीका अलग होता है और केस स्टडीज के पढ़ने का तरीका अलग होता है। विद द एक्सपर्ट्स व्हाट वी आर टेलिंग, आपका टीचर आपको हेल्प करेगा इसके अंदर कि किस तरह से आपको केस स्टडीज को पढ़ना है, किस तरह से आपकी पैसेजेस को पढ़ना है। तो इसकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कोई भी चीज की जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल रिड्यूस योर टाइम। कुलदीप सर, कैन यू एलिबरेट प्लीज? Yes, sir. And you are bang there, sir. Practice makes a man perfect. उसमें कोई दो राय नहीं है. The only thing is, हमें मालूम है, लेकिन हम स्टार्ट नहीं करते. यस सर। मैंने बहुत सारे ये तो हमारे forums साथ भी होता है कि हमें मालूम है, हम भी स्टार्ट नहीं करते। सर तो बच्चों के साथ तो होगा ही होगा होता ही है. डेफिनेटली। सर मैंने बहुत सारे फोरम्स में पूछा जहां 100, 200, 500 संख्या में लोग हैं, इवन पुलिस पर्सनल्स वर देयर. मैंने लोगों को पूछा कि कितने लोगों को मालूम है कि सुबह उठकर सैर करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. तो सबने हाथ खड़ा किया. और जब मैंने पूछा कितने लोग करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के हाथ थोड़े से उठे, कुछ के थोड़े थे. तो ऐसे सब बच्चों को पता है कि 8 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है. Absolutely right, sir. So that is the key to success. प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. एक छोटा सा एग्जांपल सर मैं शेयर करूंगा. दिस इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस विद ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड DHL. When I was there with them, हमने एक गेम खेली. वो गेम थी कि एक ट्रे में 10 ऑब्जेक्ट्स थी. वॉच, पेन, पेंसिल, ऐसे करके 10 चीजें थी, हैंकरचिफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमें 1 मिनट का टाइम दिया गया. आप इन सारी चीजों को देखिए. जब देख लिया, कहा वापस जाइए, अब इसको पेन डाउन करिए. 1 मिनट का टाइम दिया, आप लिखिए. तो वो हम 10 नहीं लिख पाए. We could end up at say 7, 8. Another 30 seconds was given. अब फिर दोबारा आइए, अब देखिए, अब वापस जाके 30 seconds में लिखिए. Believe you me, उस 30 seconds में हम 9 तक पहुंच गए थे. फिर 15 सेकंड दिए कि फिर एक बार देखिए, और अब जाके आपको 30 सेकंड में फिर लिखना है. We could write all the 10 things. Absolutely right. So this is what you have to do as a student. टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम स्पेंड करिए, स्लॉट्स बनाइए जिसकी हम बात कर चुके हैं. कीप प्रैक्टिसिंग, वेयर अ रिस्ट वॉच. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. वही क्वेश्चन अगर हम 5 मिनट में पहले करते हैं, फिर उसका टाइम 4 पे आएगा और 3 पे आएगा. सो यू सेव 2 मिनट्स. ऐसे 10 क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यू सेव 20 मिनट्स. 20 minutes is hell lot of time for you to do anything. So keep practicing. That's the key word. Thank you, Kuldeep sir and Ankur sir, for sharing your vast experience. And students, we just want to share one more thing, that if you are having any query related to Nbsc registration, I hope the number is being displayed on your screen. Sir, number is already displayed now. Number dikh raha hai na sir screen pe? Yes, we can see that. Okay, sir. So query related to Nbsc registration, just WhatsApp, no calls, please. Name, Miss Vaishali, and the contact number is already displayed over here. And thank you so much for attending this particular webinar session on Nbsc, along with our prominent author, prominent speaker, Mr. Kuldeep Singh ji. Thank you, Kuldeep sir, for sharing your views with all the students. Thank you so much, Ashutosh. I would like to thank the directors of Ankur Gupta ji. I would like to thank all the students, their parents, जो भी इस कॉल पे हैं. I would like to thank them all. Make use of this. Practice from this. Even if you score 2% extra from what it was earlier, I think the call would be worth. Thank you all so much. Definitely, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Ashutosh.